Hello students, in this part we will discuss about the respiratory organ system, respiratory organ obtained in the frog. Respiratory or respiration in frog. You can say that respiration in frog. We cannot say respiratory system in frog because there are different pathway by which frog can respire. So you can write that respiration in frog. There are three pathways, there are three types of respiration occurred in the frogs. First one is, as we know that frogs are amphibian. It means they can live on land as well as in water. They can live on land as well as in water. So the respiration is also occurred in land system as well as aquatic system. Firstly, by the gills. Immature frog means when they are present in the larva stage or tadpole, they live in water. और जो टेडपोल स्टेज में या लार्वा स्टेज में होते हैं तो वाटर में रहते हैं, तो उनके द्वारा वो सांस किसके द्वारा लेते हैं? गिल्स के द्वारा. दीज आर द गिल स्लिट्स. द टेडपोल और लार्वे obtain or exchange of gases. You can say that obtain oxygen as well as exchange of gases. Exchange of gases through gills and they remain in water. तो aquatic life के अंदर यानी वाटर के अंदर टेडपोल प्रेजेंट होते हैं, तो सांस किसके द्वारा लेते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं गिल्स के द्वारा. तो दे लिव इन वाटर. And second types of the respiration is by cutaneous respiration, or you can say that by the skin. When the frogs lives in during the estivation or hibernation, means समर स्लीप के दौरान और हाइबरनेशन विंटर स्लीप के दौरान जब फ्रॉग अपने आप को हाइड कर लेते हैं, तो उस समय वो रिस्पिरेशन किसके द्वारा करते हैं? स्किन के द्वारा करते हैं. दे आल्सो फाउंड इन वाटर, यानी हाइबरनेशन या एस्टिवेशन करते हैं तो वाटर के अंदर करते हैं. तो इस स्टेज में भी कौन सा होगा? जब वाटर के अंदर फ्रॉग प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग द हाइबरनेशन means winter sleep or estivation means summer sleep. They respire through the skin, which is known as cutaneous respiration. They respire through skin, which is called cutaneous respiration. But there are some features while the respiration can take place through skin. कुछ फीचर्स होने चाहिए जिसके कारण से वो स्किन के द्वारा रिस्पायर कर सकते हैं, और वो फीचर फ्रॉग के लिए मैच करते हैं. वो फीचर क्या क्या है? पहली बात तो स्किन जो है वो थिन होनी चाहिए, जो फ्रॉग में मैच करती है. सेकेंडली, स्किन जो है वो मॉइस्ट, मतलब मॉइस्चर होनी चाहिए, मॉइस्चर कंटेन होनी चाहिए, जो कि म्यूकस की बनी होती है, वो फ्रॉग के लिए मैच करती है. एंड थर्ड वन इज द विसरल, मीन्स vascular bundle just closer to the skin, that is also matched to the frog. There are features, मतलब कुछ फीचर्स होने चाहिए जिनके द्वारा, जिनमें स्किन के द्वारा रिस्पिरेशन होता है. वो क्या क्या फीचर्स होते हैं? थिन स्किन, ऑयली वस्कुलर बंडल, you can say that vascular system, not bundle, vascular system, and moist skin.
These all feature match with the frog, so the respiration can take place through the skin. Moist skin, this is made up of mucus cells या mucus layer के द्वारा बनी होती है। ये सारे के सारे फीचर्स फ्रॉग से मैच करते हैं। सो फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू द स्किन विच इज नोन एज क्यूटेनियस respiration, but this occurred in water as we have already discussed. This stage respiration can take place in the immature stage, but all rather than this one, there are three more stages by which the respiration can take place in the frog in adult phase. The adult phase, cutaneous respiration that occurs in water, and third one is bucco or buccal pharyngeal respiration. You can say that bucco or buccal pharyngeal respiration. This type of respiration can take place in the frog while they live on land. यानी ये जब फ्रॉग लैंड पे प्रेजेंट होते हैं तो वो बकोफेरेंजियल सिस्टम के द्वारा रिस्पायर करते हैं। व्हाट इज बकोफेरेंजियल रिस्पिरेशन? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दिस द स्ट्रक्चर ऑफ frogs, the anterior part which contains external nostril. They respire through external nostril. When they inhale the gases, another opening which is known as gallets. जो माउथ का एसोफेगस का फर्स्ट ओपनिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? गैलेट्स। और गैलेट्स के ऊपर एक स्मॉल ओपनिंग और होता है जिसको बोलते हैं ग्लोटिस। दिस इज ग्लोटिस एज वी हैव डिस्कस्ड इन 10th क्लास, एपिग्लोटिस। इट इज ए लिड विच कवर द विंड पाइप। जो फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में एक लिड की भांति काम करता है उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ग्लोटिस। और ग्लोटिस से उसके बाद जस्ट next tube and which attached to the lungs. When they take the gases from external nares, this is the external nares, means जो nostril है external की तरफ, वहां से जब सांस लेते हैं this glottis closed, ये ग्लोटिस बंद हो जाता है। तो एयर जिसके कारण से इनके बक्कल में माउथ के अंदर स्टोर हो जाती है, thus this portion is swell up, इसलिए इनके नीचे के जो हिस्सा होता है वो swell up हो जाता है। यहाँ एयर क्या होती है? स्टोर हो जाती है। वो स्टोर एयर कुछ इसमें से डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा किसमें से ग्लोटिस से पास आउट होकर के चली जाती है फेरिंग्स के द्वारा। दैट इज कॉल्ड बकोफेरेंजियल रिस्पिरेशन। दिस ऑकर्ड व्हेन द फ्रॉग लिव ऑन लैंड। दिस इज द रिस्पिरेशन in which some gases diffuses through the small pharynx. As we know that in frogs there is a small piece of pharynx between the head and the esophagus. तो जस्ट एक्सटर्नल नेरिस ओपनिंग होते हैं तो ग्लोटिस क्लोज हो जाता है, और ग्लोटिस जब ओपनिंग होता है तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल क्लोज हो जाते हैं। मींस वन वे पाथवे का जो है एक्सप्रेशन है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। व्हेन दे inhale the gases, external nostril opens, then the glottis closed. This inhaled gas filled in the buccal cavity which swell up this area, जिसके कारण से नीचे का एरिया swell up हो जाता है फ्यू टाइम्स के लिए। और उसके पश्चात जैसे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल बंद होते हैं, ग्लोटिस ओपन होता है तो एयर फिलअप कर जाती है। एयर फिलअप करती ग्लोटिस के पाथवे से उसको हम लास्ट में बोलेंगे पल्मोनरी रिस्पिरेशन। लेकिन यहाँ पर जब एयर स्टोर होती है तो उसमें से कुछ गैसेस का पोर्शन, कुछ गैसेस डिफ्यूज कर जाती है बिकॉज दिस इज द थिन मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एज वी नो दैट इट इज नोन एज आल्सो नोन एज सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होती है which allow only some substances such as CO2, O2 and water to pass it through it, जिसमें से CO2, O2 जो वाटर है वो पास आउट हो जाते हैं।
तो जब इसमें एयर स्टोर होती है ये क्लोज्ड है, लेकिन सेमिनल सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होने के कारण से कुछ गैसेस इसमें से डिफ्यूज होकर अंदर एंट्री कर जाती है, विच इज नोन एज बकोफेरेंजियल रिस्पिरेशन. इट ऑकर्स इन एडल्ट फ्रॉग ड्यूरिंग व्हेन दे लिव ऑन लैंड. एंड फोर्थ टाइप ऑफ रिस्पिरेशन इज pulmonary respiration. Pulmonary respiration means the respiration which occurred through the lungs, यानी जिसमें lungs के द्वारा respiration होता है, that is called pulmonary. How is the respiration can take place through the lungs? As we know that this is the gullet, which is the opening part of the esophagus. Just above the gullet, a small opening is also present. This is gullet, and this small opening is known as glottis, which is the pathway of passing the air, जिसमें से air pass out होगी. So this is the structure of glottis. And after the glottis, the tubes are arises like this one, and then when they branch, और ये आफ्टर में ब्रांच में चेंज होती है, विच इज नोन एज ब्रोंकियाई, मीन्स दो ब्रांच ब्रोंकियाई. देयर इज नो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकियाई, जस्ट लाइक एज ह्यूमन बीइंग. दे हैव ओनली प्राइमरी ब्रोंकी, टू ब्रोंकियाई विच ओपन्स इनटू द sac like structures. These sacs like structures are known as lungs. Glottis opening, the gas exchange of gases can take place through the glottis. The gas inhaled through the glottis and passed through the bronchi reach to the lungs. In lungs there are sac-like structures. These are the sac-like structures. But as we know that in human being, lungs fine network of tubules which change into a balloon-like structure. Human being के lungs के अंदर छोटी छोटी नलिकाओं का जो जाल होता है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में चीज, जिसको क्या बोलते हैं, एल्वियोली. एंड दीज आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द लंग्स. दीज सैक्स लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज एल्वियोली, वेयर द गैसेस आर स्टोर्ड and the CO2 is removed through the alveoli to bronchi, bronchi to glottis, and after that this is exhaled through the body. This is the respiration system can take place in the frog. Again, we cannot say respiratory system. This is because there are different pathways through the respiration can be occurred in the frog. In frog, as we know that frogs are amphibian, means they live in water as well as on land. There are 4 types of respiration can take place in frog by gills. Gills only in tadpole or larva stage when they are found in water. Cutaneous respiration means the respiration which takes place through the skin. But there are some features. The organism which respire through skin, there are some features. First one is the skin must be thin, skin must be moist, and there are many vascular system may be present, means blood vessels may be pass out through the skin, near to the skin. These all feature match in the frog. When the frogs are during their winter or summer sleep, they respire through skin, means this respiration will also take place in water. And third one is bronchopharyngeal respiration, means माउथ में से कुछ डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा गैसेस जो होती हैं एक्सचेंज कर जाती हैं, दैट इज कॉल्ड bronchopharyngeal respiration. This occurred in frog, adult frog, while they are live on land. And last one is pulmonary respiration. As we know that the mouth opening, esophagus opening is gullet. Just above the gullets, a small opening is also known as glottis. This glottis may rise the tubes, 2 tubes which are branched, and these branched tubes are known as bronchi, which finally open into the sac-like structure called lungs. In lungs there are many sac, means जहां पर air store होगी वो sac और bag-like structure present, which are known as alveoli.
As bronchi in frog just not developed like as human being. In human being, bronchi into primary, secondary, tertiary, and finally change into balloon-like structure, which is known as alveoli. But in the frog, alveoli is present in sac-like structure in lungs. So this type of respiration can take place, is known as pulmonary respiration. This also occurred while the frog live on land. This is the respiration system, respiration can take place in frog.